Hey guys, welcome back to the fourth and final tutorial session of drawing Manini Radharani. In this video, I'm trying to paint the ornaments, garlands, and some finishing touches while left over. ऑर्नामेंट्स ड्राइंग करने के लिए आपको उतना भी परफेक्ट शेप और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप सिंपल एंड एफिशिएंट तरीके से इसे बना सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट सेम एज द कलरिंग ऑफ स्किन टोन और द अदर पार्ट्स. You need to put mostly 3 tones in there, the dark, medium and light, and then leave it for a few hours to dry it, and till then you can paint some other portion of the painting. एक बात और, ऑर्नामेंट्स बनाने के वक्त उसकी शैडो पोर्शन भी छोड़ दीजिए, नहीं तो दिस फाइन डिटेलिंग वर्क कैन बी स्पॉइल, यू नो. पर ये सब शैडोज़ भी ज़रूरी है और आप उसे बाद में बना भी सकते हैं. While drawing the griddles, I could not able to capture the color adjustment in right way, so I need to leave it for now and come again later to add the dimension.
गार्लैंड्स के भी एक अपना फंडामेंटल होता है, जैसे कि ऑल द फ्लावर्स इन इट आर नॉट ड्रॉन वन बाय वन, रेदर हैप्पीजर्सली। पहले मीडियम टोन से ही स्टार्ट कीजिए, फिर लाइट टोन अप्लाई करने के बाद डार्क टोन, एंड फाइनली सम रिफ्लेक्टेड लाइट एंड हाईलाइटेड पोर्शन। ऐसे करते रहिए, बस वो आ जाएगा। You know, friends, I'm quite in a state of confusion because the folds of the drapery I have drawn here seems a bit of odd to me. So I have drawn few sketches and finally I made this one, and I'm trying to paint this one over there. Though in the meantime I got help from one of my junior batchmates, and she sent me some of her pictures in this poster, and those pictures really did help me. I'm really very thankful to her. I think that you guys also gonna appreciate this one after I finish my idea with the drapery.
Now, designing on the surface of the cloths is also a tricky part. You must not hurry for it, and it's almost same as the jewelry part. But the difference is, um, it's solid till not metal. So texture of the fabric should be with it. Again, coming back to the background, I'm trying to paint few birds. These are almost of 3 to 4 centimeters in length. So I used number of 00 and 000 brushes to paint them. एक फैन ब्रश का यूज़ करते हुए आप ग्रास पोर्शन को इजीली कलर कर सकते हैं, पर मैं ग्राउंड पोर्शन में और भी डिटेलिंग ऐड करना चाहता था. बट समटाइम्स too much works can ruin your originality. So you need to be very careful, right? But look, just wait and see how it comes at the end. जस्ट वॉच केयरफुली कैसे हम इस पार्ट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एंड हाउ आई एम ट्राइंग टू ऐड सम मोर हाईलाइटेड लीव्स थ्रू आउट द वे ऑफ द sun rays are coming through.
अब बड़ी है इस दुपट्टा को कलर करने की। मैं ये पहले से ड्राइंग नहीं किया क्योंकि इसे ट्रांसपेरेंट जैसे करना था। Well, this one is the last tutorial season of painting Manini Radharani, and I gonna upload a total drawing video of this painting in time lapse, and of course not the tutorial one.